When we talk about gaseous exchange over here, बेटा जब हम यहाँ पे gaseous exchange के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस का एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है? तो पहले तो एक बारी एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होगा, एंड बाद में देयर विल बी एक्सचेंज बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई, हमारे बाहर, हमारे लंग्स के बाहर, ये डायग्राम देख लो, ठीक है? क्या होता है बेटा हमारे लंग्स के बाहर? पहली बात, अगर सपोज एक ये डोर है, ठीक है, और इस डोर को ये 3 उँगलियाँ जो है वो धक्का मार के ओपन करना चाहती है। अगर ये 3 उँगलियाँ इस डोर को धक्का मार के या इस हाथ को धक्का मार के पीछे कर रही है, तो इफ सपोज देयर इज 100 पास्कल ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, या व्हाटएवर the pressure is 100 pascal का pressure with the help of which this is going behind. Will that 100 Pascal of pressure be of one finger? No, it will be a combination of all three. यानी वो 100 में से कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा. Not a complete but partial pressure. Likewise, in a particular system also, there are multiple gas which provides pressure, but the individual pressures of each will be considered to be as partial pressure. So in air, when we talk about, the partial pressure of oxygen is way, way high, as mentioned over here. It is 159. Okay, 159. It is 159. And that of carbon dioxide is only zero point 0.4. But as soon as it enters in alveoli, the partial pressure of oxygen over here becomes 104, and partial pressure of carbon dioxide becomes 40 mm of Hg. All right. Now, जब हमारे एल्वियोलाई में ये चीज है, तो हमारे ब्लड वेसल में आइडली दिस blood will be an impure blood. And since it is an impure blood, this will have its partial carbon dioxide to be as 45 mm of Hg, and oxygen will be 40 mm of Hg. Now, looking at the difference over here, there will be a gradient which will be formed, and an immense pressure is created on the membrane, that is exchange membrane. तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या क्या हो जाएंगी? तो उसमें दिस फर्स्टली विल बी squamous epithelium tissue of alveoli. You would definitely have basement membrane as mentioned, and you will have something called as endothelium, which is nothing but squamous epithelium of blood vessels. ये 1, 2 और 3, ये तीनों मिला के एक एक्सचेंज मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसके द्वारा there will be diffusion of gases that will be occurring. Now, since the partial pressure of oxygen is less in your blood vessels में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो in this blood vessel, the partial pressure of oxygen is less. Yeah, partial pressure of oxygen is less. Now, since the partial pressure of oxygen is less over here, it is only 40 and here it is 104, oxygen will enter inside, go to the gaseous exchange, will enter inside the blood vessels and increase to come up to somewhere around 90 mm of Hg. Whereas oxygen is more over here, sorry, CO2 is more over here and less over here. So that CO2 concentration will go somewhere around of 40 mm of Hg inside the oxygenated blood. This blood will now go inside your heart back again, और हार्ट से जाएगा पूरे बॉडी में. तो जब वो बॉडी में जा रहा है, तो टिश्यूज के पास हो जाएगा. ऑक्सीजन जब वो टिश्यूज के पास जाएगा, तो ओरिजिनली टिश्यू जो होता है उसके पास पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 45 एंड पार्शियल ऑक्सीजन विल बी 40. बट on exchange of gases, automatically टिश्यू का जो concentration है अब will turn out to be partial oxygen will be 45 and partial CO2 will be 40.
All right. Partial CO2, partial CO2 will be 40. All right. Now, when there is diffusion occurring, as soon as the oxygen enters inside the blood, based on their solubility, the oxygen and carbon dioxide diffuses in the blood or gets transported accordingly. So, the next thing is how exactly oxygen and carbon dioxide gets transported.